हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड इसके बाद और एक वीडियो आएगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रहेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाए। ओके, प्लस हमने NICL एंड SBI क्लर्क की भी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ जनवरी से अपन उसका रेगुलर डे वाइज अपन यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अपन डे टू डे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्यूटी के प्लस मॉक पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करें। ओके, मतलब वो कंप्लीट सीरीज पूरी 1 मंथ चलेंगे, तो 1 मंथ आप कंटिन्यू जिन्होंने भी NICL असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क का फॉर्म फिल कर चुके हैं वो सीरीज देखना स्टार्ट कर ले। एकदम टाइम पे अपना प्रिपरेशन नहीं होगा, इसलिए डे टू डे अगर प्रिपरेशन करेंगे तो 1 मंथ में अपना अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो पेपर भी इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी। तो प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी अगर देखते हैं तो वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको अपन IPO बोलते हैं इन शेयर मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। तो ओनरशिप अगर देखते हैं तो वो होता है इक्विटी। जब इक्विटी शेयर्स परचेस करते हैं तब अपने को ओनरशिप मिलता है कंपनी में। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अ जंक बॉन्ड रेफर्स टू। तो जंक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड विथ लो क्रेडिट रेटिंग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर। द डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अगर देखते हैं तो वो होता है कमर्शियल पेपर। ओके, नेक्स्ट सिक्स, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय। तो ट्रेजरी बिल कौन इशूड करता है? सेंट्रल बैंक। ओके, नेक्स्ट सेवन, a call option gives the buyer to the right to. The answer is buy an asset at a specified price. Next eight, a swap contract involve. The answer is exchange of cash flow between two parties. Next nine, an ETF is typically traded on. The answer is stock exchanges. Okay. Next 10th, mutual fund NAV represent. The answer is net value per unit of the fund. Next 11, gold is traded as a commodity primary to hedge against currency risk. Okay. Next 12, which of the following is not a commodity? तो आंसर इज ट्रेजरी बिल। तो देखो, क्रूड ऑयल जो होता है वो कमोडिटी होता है, सिल्वर जो होता है वो होता है, एंड वेट जो होता है, लेकिन ट्रेजरी बिल इज नॉट अ कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट 13, वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकस ऑन। तो वैल्यू जो इन्वेस्ट होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। ओके, नेक्स्ट 14, द डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व। तो आंसर इज investing equal amount at a given regular interval. Okay, next 15, the PE ratio is typically used in, तो PE ratio किसके लिए यूज करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट 16, which of the following is a technical analysis tool। तो टेक्निकल एनालिसिस कौन सा है? मूविंग एवरेजेस। ओके, नेक्स्ट 17, the Markowitz model is based on। तो आंसर इज डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट 18, which measure is commonly used to evaluate portfolio performance। तो आंसर इज शार्प रेशियो। नेक्स्ट 19, द रिस्क प्रीमियम रिप्रेजेंट। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है? इट इज अ एडिशनल रिटर्न फॉर टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट 20, बीटा मेजर्स। तो बीटा मेजर्स क्या होता है? इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट 21, डाइवर्सिफिकेशन प्राइमरी रिड्यूस, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट 22, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हेजिंग। आंसर इज डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट 23, द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड टू। आंसर इज इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? तो देखो, डेब्ट, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग ये होते हैं, लेकिन फिक्स एसेट जो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 25, द मोडिग्लानी मिलर थ्योरम assume, तो आंसर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर does not affect firm value. Okay, next 26, which factor influence the choice of debt versus equity financing? तो टैक्स बेनिफिट ऑफ डेब्ट होता है, मार्केट लिक्विडिटी भी होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट 27, द क्लाइंटेल इफेक्ट सजेस्ट, तो आंसर इज इन्वेस्टर चूज स्टॉक दैट मैच देयर डिविडेंड प्रेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट 28, a reducible dividend policy means, answer is paying dividend only after financing investment needs. Next 29, a merger where two companies operate in unrelated industry is called conglomerate merger. Okay, next 30, which is the primary motive for acquisitions? So answer is market expansion. Next 31, the cost of equity can be estimated using the CAPM. Okay. Next 32, the present value of future cash flow is used in. The answer is discounted cash flow valuation. Next 33, which is the key input for financial model? So historical financial data, microeconomic indicator and projected growth rate. The answer is all of the above. Next 34, the sensitivity analysis in financial modeling examine. The answer is impact of changes in assumption on outcomes. Next 35, which statement provide information about a company liquidity? Answer is balance sheet. Next 36, horizontal analysis involve. Answer is comparing financial data over time for the same company. Next 37, the quick ratio exclude. Answer is inventory. तो देखो, अकाउंट रिसीवेबल होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है, मार्केट सिक्योरिटीज भी होती है। ओके, नेक्स्ट 38, a high debt to equity ratio indicate. The answer is high financial leverage. Next 39, solvency ratio assess a company ability to. The answer is meet long term obligations. Next 40, current ratio is calculated as. The answer is current liability divided by current asset divided by current liability. Next 41, a zero-based budgeting approach. Answer is start from scratch for each period. Next 42, forecasting financial statement involve projecting. So revenue and expenses, asset and liability level and equity changes. The answer is all of the above. Next 43, active portfolio management involve. The answer is selecting undervalued securities. Next 44, which is an example of passive investment strategy? Answer is indexing. Next 45, standard deviation measure. Answer is risk or volatility of return. Next 46, the capital market line represent. Answer is risk return trade off for efficient portfolios. Okay. Next 47, the EMH assume. Answer is prices fully reflect all available information. Next 48, which form of EMH suggests insider information cannot generate excess return? Answer is strong form. Next 49, behavioral finance suggests that investor, answer is, are influenced by cognitive bias and emotions. Next 50, the anchoring bias in behavioral finance refers to. The answer is focusing heavily on an initial reference point.
Next 51. The trainer ratio or evaluate performance based on. Answer is systematic risk. Next 52. Jensen's alpha measure. Answer is return compared to beta adjusted market performance. Next 53. Private equity typically involve. Answer is investing in privately held companies. Next 54. Which of the following is example of real estate? The real estate मतलब क्या होता है यहाँ पे real estate. Okay. Next 55. The spot exchange rate refers to. Answer is the current exchange rate for immediate delivery. Next 56. Purchasing power parity theory explain. Answer is exchange rate based on relative price level. Okay. Next 57. A forward contract in a forex market is. Answer is a customized contract for future delivery. Next 58. Currency arbitrage involve. Answer is exploiting price differences between market. Next 59. A natural hedge refers to. Answer is balancing inflow and outflow in the same currency. Next 60. Which instrument is commonly used to hedge foreign exchange risk? Answer is future contracts. Next 61. Foreign direct investment involve. Answer is controlling ownership in foreign business. Next 62. A trade surplus occur when? So answer is export exceed import. Next 63. The 2008 financial crisis was triggered by. Answer is subprime mortgage lending. Next 64. Which financial instrument played a major role in 2008 crisis? Answer is credit default swap. Next 65. Value at risk measure. Answer is the maximum potential loss within a given confidence interval. Next 66. Which of the following is not a type of financial risk? तो देखो मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क भी होता है, इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है, लेकिन ऑपरेशन रिस्क फाइनेंशियल रिस्क में काउंट नहीं होता है. नेक्स्ट 67. मार्केट रिस्क इज नोन एज. तो मार्केट रिस्क को अपन बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. नेक्स्ट 68. लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू. आंसर इज इनएबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. Next 69. An increase in interest rate typically cause bond price to. Answer is decrease. Next 70. Inflation risk impact investment by. Answer is reducing purchasing power. Next 71. Basel III guideline focus on. Answer is enhancing bank capital requirement and risk management. Next 72. SEBI regulates. Answer is mutual fund, derivative market and stock exchange. Answer is all of the above. Next 73. Which of the following is not a commodity? तो देखो गोल्ड होता है, क्रूड ऑयल होता है एंड नेचुरल गैस कमोडिटी में आता है, लेकिन रियल एस्टेट नहीं आता है. तो आंसर क्या है? रियल एस्टेट. Next 74. The primary purpose of commodity future contract is to. Answer is hedge price risk. Next 75. The contrarian investment strategy involve. Answer is buying undervalued asset and selling overvalued ones. Next 76. Dollar cost averaging is a strategy that. Answer is invest a fixed amount regularly regardless of price. Next 77. The price to earning, that is PE ratio, is used in. Answer is fundamental analysis. Next 78. A head and shoulder pattern is a signal for. Answer is trend reversal. Next 79. Modern portfolio theory जिसको MPT बोलते हैं, focus on. Answer is
maximizing return for given level of risk. Next, 80. Which measure is used to determine portfolio diversification? Answer is correlation coefficient. Next, 81. Strategic asset allocation involve. Answer is long-term allocation based on risk tolerance. Next, 82. Tactical asset allocation differ from strategic allocation by. The answer is making short-term adjustment based on market trends. Next, 83. The risk return trade off implies that. The answer is higher return come with higher risk. Next, 84. Which type of risk cannot be diversified? आंसर इज मार्केट रिस्क. देखो क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन मार्केट रिस्क डाइवर्सिफाइड नहीं होता है. नेक्स्ट 85. डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन. डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स किस लिए करता है? रिड्यूसिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क. नेक्स्ट 86. हेजिंग इज प्राइमरी यूज टू. आंसर इज reduce exposure to specific risk. Next 87. Beta in CAPM model represent. Answer is systematic risk compared to the market. Next 88. A negative Sharpe ratio indicate. Answer is risk-free return exceed portfolio return. Okay. Next 89. The Harding effects occur when. Answer is investor mimic the action of others. Next 90. Overconfidence bias in investing leads. Answer is excessive trading. Next 91. A financial model purpose is to. Answer is analyzing historical financial performance and project future financial performance. The answer is both A and B. Next 92. Scenario analysis in financial modeling helps to. The answer is evaluate outcome under different conditions. Next 93. The primary goal of Basel III is to. Answer is straighten banking regulation and reduce systematic risk. Next 94. Anti-money laundering compliance require. Answer is reporting suspicious financial transaction. Next 95. A current account deficit indicates. Answer is more imports than exports. Next 96. Capital control are used to. Answer is regulate cross-border capital movement. Next 97. Interest rate swap are used to. Answer is manage interest rate exposure. Next 98. Which of the following is best describe credit risk? Answer is risk of default on financial obligation. Next 99. A limitation of VAR is that. Answer is does not consider extreme event beyond the confidence interval. Next 100. VAR is typically calculated over. Answer is short time horizon. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस एनआईएसएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क की भी अपन ने सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसके भी अभी रेगुलर वीडियोस पोस्ट हो. क्लियर? थैंक यू.